I repeat, we'll come to the point right away. A little bit of theory, a little fast paced. If you have a doubt somewhere, you can ask me. Else, all the questions are on and around this equation called Arrhenious equation, which is K is equal to A into e to the power minus EA by RT. K certainly is rate constant, which is a function of temperature only. And this is how it depends on temperature. K and T are the only variables. A, the very popular pre-exponential factor. What's another name for pre-exponential factor? Who will tell me? Frequency. Now, this is going to be a big number. It's going to be a big number. You'll see it's 10 to the power 10, 12, 13. It's going to be a number very big and, almost constant for so many reactions of the same type. Pre-exponential because it's before the exponential wala E, which the number. EA is going to stand for activation energy, which is a constant for a given reaction. R is universal gas constant. So I think this is pretty visible and being understood. K and T are the only variables, and right away in Arrhenious equation, what we are going to talk about is change in K with change in temperature. How K changes with temperature. T and K are the only variables. I repeat, for a given reaction, activation energy is constant, universal gas constant is a constant, E is a number, this is a constant for so many reactions of the same type, and we'll want to move on. Yes, I'm being understood. K is equal to A into e to the power minus EA by RT, and we move to a more user-friendly form, taking log on both sides. Log K is equal to log A minus EA upon RT is the logarithmic form. Taking log on both sides, I'm going to get a more application-oriented form. Now, please hear me out. In the logarithmic form, I could apply it more easily. At a temperature T1, if the value is K1, at a temperature T2, if the value is K2, at any point of time you have any disruption, any discomfort, any problem, please stop me. Otherwise, I want to move at a pace. Temperature T1 per value K1 or temperature T2 per value K2 hai. So this is what I am going to eventually arrive at. Log K2 by K1 is 2 minus 1. So when I write 2 minus 1, log A get cancelled, and it will be EA by R common, 1 by T1 minus 1 by T2, and eventually log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2 is going to be the most sought after equation. This is log to the base E. This is log to the base E. When you convert it to the common logarithm, you'll have a factor of 2.303. I think I'm being understood. But look, at any point of time, you have any doubt, please let me know. I think we're happy with this. Yes, sir. Yes, sir. So what I'm going to do is I'm going to rewrite these one more time. I mean, maybe just a minute again on the crude form, the logarithmic form, and the logarithmic form where two temperatures that have two values of K1 and K2 at temperature T1 and T2. The two equations very mathematically will align to a final result, where if I know the activation energy, I can calculate the value of K at different temperatures. Now, this is how I begin. This is the logarithmic form. To the base 10. So you have a very common question. It looks like y is equal to mx plus c. So when you plot it as log k versus 1 by t, it's a very common question. It keeps on making rounds. When you plot log k versus 1 by t, you'll have a negative slope.
and this negative slope will have this as log A. The slope would certainly be minus EA by R in case it's natural logarithm, and if it's common logarithm, if it's suppose log to the base 10k, this is again going to be log A, slope is minus EA by 2.303R. These are small little things, but accounts for questions very often, very popular with examiners. So, it gives the impression of equation of a straight line. Finally, log K2 by K1 is equal to EA T2 minus T1 upon 2.303 R T1 T2. I think you all are happy with this. And the first impression I have about this equation is certainly if temperature increases, K increases. If temperature increases, K increases. This is the first-hand information. About the basic Arrhenious equation, its logarithmic form, how you apply it for two different temperatures and the corresponding values of K if EA is known. Again, if the values of K are known at two different temperatures, EA can be calculated. EA and R should be in the same unit. Just have this particular stuff in mind. This EA and R should be in the same unit. So many times it could be a confusing factor. बच्चे लोग यहाँ तक लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. You're all happy with this? T2 more than T1, all of this is positive, K2 more than K1. And then, what I also tell you is the graphical approach to things. This is mathematically telling you K2 is always more than K1. And when I plot energy versus the progress of the reaction, I would have done it multiple times in the past. And a process starts with reactants, end with products. So reactant to products. This is HR, this is HP, enthalpy of reactant and products. You remember enthalpy because of the energy exchange at constant pressure, which is of more consideration. Constant pressure is enthalpy change. This will become delta H, this will become delta H. Now this is activation energy. This is activation energy. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. ये जो transitory state या जिसको activated complex बोलते हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ये टोटल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं. I hope it's pretty visible. I'm not getting any response from the class. Please speak and let me know that you're comfortable with this pace. Yes, sir. Yes, sir. Basically, there is energy required to take part in the reaction. And you would have heard me speaking this language exactly in the same manner. Hey, this is the energy barrier. It needs to go till this point and then it's downhill. ये energy जितना molecules के पास रहेगा, उतना molecules will take part in the reaction. What is temperature? Temperature is a measure of the energy content of the system. So naturally, with increase in temperature, when you increase temperature, on increasing temperature, more molecules have EA, more rate of reaction. So this is the graphical and the fundamental understanding. I mean, I'm going to repeat it one last time. This looks obviously more for numerical, applications, and right away, that's the beauty of temperature and Kelvin scale. You can authentically say temperature बढ़ाने से K हमेशा बढ़ेगा. What's the fundamental story? More molecules will be able to cross the energy barrier. More molecules crossing the energy barrier, more molecules taking part in the reaction. Temperature is always going to increase the rate of a reaction. I think we're done with this. Yes, sir. Yes. An extremely important aspect of this equation is, and I've brought this to your notice multiple times, and it gives me so much of delight to tell you, ये JEE मेंस में भी काफी आ रहा है. JEE मेंस के क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम सीट में दिया उसमें आ रहा है. Although language एकदम clinically perfect नहीं है, but this is something which I told you in the past. Hey, for same T1 to T2, a change in K
A change in K, or basically K2 by K1 is more for a reaction with higher or more activation energy. I mean, this is an important result. I do tell you, टेम्परेचर के साथ में K बढ़ेगा, बट जिस रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ में K बढ़ेगा, बट जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा. I think I'm being understood. I think I'm being understood. You can quickly take a snapshot, or I have a recorded video which I did share with you. This is basically for you to ask your doubt, if any. I would want to go into problem solving right away. Maybe another 5 minutes to your catalyst. Anything which you want me to repeat? With temperature T increases, but naturally for two different reactions, the one having higher activation energy will have a higher change in K for the same change in temperature. Am I being understood? बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. All right. I mean, this is going to help us in Lee-Chatelier's principle, reversibility to a very large extent. Temperature coefficient is something, which I wanted to discuss. Temperature coefficient is basically the ratio of a reaction for a 10-degree increase in temperature, which is basically the change in K. You know what changes with temperature is K. And ideally, this is K 35 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, 25 to 35. Celsius में लिखता हूँ because you tend to remember 25 degree more often. Naturally, 298 and 308 are going to be, the relevant stuff in terms of T, capital T. So the ratio of a reaction for every 10 degree increase in temperature, and generally this lies from 2 to 3. This value is between 2 to 3. ये सब ना स्टोरी है, ये सब किताब में लिखा रहता है. This is not biblical, but generally, the temperature coefficient, which is the change in rate or the ratio of change in rate, increase in rate, ratio of increase in rate for 10 degree or 10 Kelvin change in temperature. मेरे को लग रहा है सबको मेरा बात समझ में आ रहा है. बच्चे लोग जल्दी बोलो हाँ या ना. अरे हाँ बोलो यार, आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. तो ना जो बात मैं वहां पर बोल रहा हूँ, फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, द चेंज इन केस फॉर इज मोर फॉर अ रिएक्शन हैविंग मोर EA, आई कैन से टेम्परेचर इज गोइंग, थीटा इज गोइंग टू बी मोर फॉर अ रिएक्शन with higher EA, yes or no? I can obviously say this. जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा होगा. जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा होगा. Yes or no? Yes, sir. So these are different ways of speaking the same stuff. These are different ways of, coming to the same point. And if you're happy with this, I want to talk about the role of a catalyst. Catalyst, it alters, first of all, the mechanism. It provides a shortcut if it's a positive catalyst. By altering the mechanism, naturally it changes the energy profile. Because if it's a different mechanism, it's a different energy profile. But this is something which you'll have to want to write as the right answer. What does a catalyst do? It changes activation energy. It changes activation energy. I think everybody is understanding me. A positive catalyst is going to lower activation energy. A positive catalyst is going to lower activation energy. Yes or no? तो चलो हाँ ना बोलो. हाँ, sir. तो अगर E के लिए K है तो E प्राइम के लिए K प्राइम है. If I write this is equation 1, this is equation 2, naturally log K prime by K would be equal to EA minus EA prime upon RT. This will be 2.303 if it's to the base 10. I'm just writing the concept involved, which is if EA prime is less than EA, K prime is more than K, we call it a positive catalyst. कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोसेस का रेट को हम लोग को
कंट्रोल करना पड़ता है, और वहां पर हम लोग यूज करते हैं व्हाट्स कॉल्ड अ नेगेटिव कैटलिस्ट. बट बेसिकली हाउ डज अ कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन. पहला बात तो मैं पहले बार नहीं बहुत बार बोल चुका हूं, अ कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन. इट माइट बी रीजेनरेटेड, इट माइट बी रीबॉर्न. Effectively, its concentration might remain unaltered, but it does take part in the reaction. What it does is it changes the mechanism, the energy profile, and ये याद रखना होगा. It changes the activation energy. If it lowers the activation energy, say A prime less than EA will mean K prime more than K. We'll want to move on. We'll want to move at a faster pace, and itching to go into problem solving. This is the graphical representation. If it is R2P uncatalyzed, this is R2P using a positive catalyst. Very clearly, it lowers the energy barrier. It lowers the energy barrier. पहले temperature बढ़ा करके you are allowing more molecules to pass the energy barrier. Now you are pulling down the energy barrier. So it's changing the mechanism. It's decreasing the activation energy. A lot more could be discussed about it when the time is right. If it makes the journey more difficult, you could say it's a negative catalyst. But I think I have made it very clear. एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, ये बात तो सबको समझ में आता है कि कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है. कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है. कैटलिस्ट ना एक्चुअली दो काम कर सकता है. कैटलिस्ट एक रेट इंक्रीज करता है, या कभी कभी द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू प्रोवाइड अ लोअर टेम्परेचर at same rate. Now, what do I mean by lower temperature at same rate? You could do the process at the same rate at a lower temperature. So many times, you're not willing to cut down on time. You're willing to cut down on the expense. You want it to be done at a lower temperature. यहाँ पे naturally rate बढ़ाता है because K prime is more than K. यहाँ पर K prime is more than K. But same rate का मतलब क्या हो जाएगा? Same rate का मतलब क्या हो जाएगा? Same rate का मतलब क्या हो जाएगा? K prime is equal to K. And again, it could be written as K prime equal to K, could be written as EA prime by T prime is equal to EA by T. This is exactly what I'm going to use in problem 1 to begin with, where naturally EA prime is less than EA prime is less than T. Please respond if you're understanding this part or not. Generally, this is understood by all of us, that activation energy is lowered and K increases and the process becomes faster and faster. But if suppose you're happy with the rate of the reaction, you could do it at the same rate at a lower temperature. Is this part understood by you? Please respond. Yes, sir. And right away in problem 1, I'm going to use this. So I think this is the brief intro I wanted to have. And let's plunge into problem solving. Anything which you want me to repeat, doesn't even need more time, more elaborate explanation of anything, or we're ready for solving questions. Come on, tell me quickly. I would rather want to hear how you have attempted the questions. So we are clear to go, clear to move rather. Questions करें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, धन्यवाद. फाइनली कुछ लोगों की सिक्योरिटी मिल गई है, तो मैं आगे बढ़ता हूं. क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन 1, I'll only talk about the relevant stuff. रिवर्सिबल रिएक्शन है, डेल्टा एच फॉरवर्ड 20 किलो जूल पर मोल है. एक रिएक्शन है A बिकमिंग B, डेल्टा एच फॉरवर्ड. डेल्टा एच हमेशा फॉरवर्ड ही होता है, ठीक है. डेल्टा एच हमेशा फॉरवर्ड ही होता है. बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज 300 किलो जूल पर मोल. Activation energy of the forward reaction is 300 kilojoule per mole. And if the reaction is catalyzed, keeping the concentration same, the rate of the catalyzed forward reaction at 327 is the same as uncatalyzed reaction at 327 degrees Celsius. So using a catalyst, rate at 27 degrees Celsius is equal to the rate at
327 degrees Celsius without a catalyst. So this is the stuff. This is the stuff where I'm going to use EA prime by T prime is equal to EA by T. I think I'm being understood. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Find activation energy of the catalyzed backward reaction. Find activation energy of the backward reaction. Now this is for the catalyzed reaction. This is for the catalyzed reaction. Somebody who can give me the answer right away. So 130. 130. 130 indeed is the right answer. 130 is indeed the right answer. 130 is indeed the right answer. I could hear it from Vani. I could hear it from Wade. Anyone else, who has come up with 130 as the right answer? Now, naturally, if EAF is 300 and with a catalyst, the rate is, naturally becoming the same at a lower temperature. Let me find the activation energy using the catalyst. Allow me to write EAF by T is equal to EAF prime by T prime. This is using a catalyst. तो चलो हाँ ना बोलते रहो. हाँ सर. ये कैटलिस्ट के बिना जो था 300 था 327 केल्विन 3600 केल्विन एंड दिस इज लाइक EAF प्राइम अपॉन 27 पे हो जा रहा है ना, तो EAF प्राइम 150 आएगा. देखो यार है. हाँ सर. हाँ सर. यार है समझ में. ये रिएक्शन है कैसा, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक. नेचुरली एंडोथर्मिक है. डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है. एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू EAF माइनस EAB is also EAF prime minus EAB prime. So this is how I'll get EAB prime. I got EAF prime as 150. So naturally EAB prime would be EAF prime minus 20, which is 150 minus 20, which is 130. Fair enough? Yes, sir. हाँ सर. Somebody is willing to have a graphical understanding. क्या ये है, क्या ये एंडोथर्मिक है ना? एंडोथर्मिक है. चलो मान लो ये अगर इतना 300 है तो मान लो ये 20 है. रफली ये 300 की जगह हो गया, आधा पे रुकना पड़ेगा ना 150. ये है 20. प्रॉब्लम में ये दिया था 300. हम निकाले ये एज 150 में से 20 माइनस करके ये है मेरा EAB प्राइम जो है 130. ये निकालना था. देखो बच्चों, कोई तकलीफ, कोई दुविधा? ये activation energy, this is activation energy catalyzed, which is letting it happen at the same rate at much lower temperature. 300 था, जब 327 डिग्री पर हो रहा था उसी रेट से अब 27 डिग्री पे हो रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करके 150 हो गया. 150 हो गया, एंडोथर्मिक है. बैकवर्ड का 130 होगा, 130 होगा 20 माइनस करके. सब लोग खुश हो तो बच्चों आगे बढ़े. Yes, sir. हाँ सर. So even if it's a theory kind of question, I'll write the stuff which is relevant. मैं बताऊं, हमेशा प्रॉब्लम शीट का हार्ड कॉपी ले लेना चाहिए. प्रॉब्लम शीट का हार्ड कॉपी लेना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव. अब मैं लिख तो दूंगा नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. Before the statements, if somebody can give me the right answer. So Stronger the temperature dependence. होगा. 2. इसका भाषा ना थोड़ा सा अजीब है. Stronger the temperature dependence of the rate constant, more is activation energy. I'll go with this. मैं इसको मान लूंगा. Although a better language would be higher the activation energy, more is the temperature dependence of K. मतलब I will always want P to be a function of activation energy than the other way around. I think I'm being understood. बोलो बच्चों. हाँ सर. हाँ सर.
So again, I'll think about k is equal to a into e to the power minus Ea by RT. Naturally, अगर ये zero हो जाएगा, then this will become constant. It is independent of temperature. ये वाला फैक्टर था, ये अगर zero हो जाएगा, ये zero हो जाएगा, तो टेम्परेचर के साथ में इसकी का कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा, तो ये भी true हो गया. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा statement है stronger the temperature dependence of K, lesser is EA. Now naturally this is wrong. And D में बोलता है if there is no correlation between temperature and rate constant, it means the activation energy is negative. Activation energy किसी भी हाल में नेगेटिव हो ही नहीं. एक्टिवेशन एनर्जी कभी किसी हाल में नेगेटिव हो ही नहीं सकता. मतलब एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होने का कोई सीन ही नहीं है. So A and B looks all right. Anyone, any doubt? Please let me know. You know, I have been very vocal about this particular fact. एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होता है फॉर द सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर के उतना ज्यादा चेंज होता है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट उतना ज्यादा होता है. यू नीड अ हेल्प हियर, प्लीज लेट मी नो, एल्स आई वांट टू मूव ऑन. बच्चे लोग क्वेश्चन 3 B, sir. बताओ कौन सा B रास्ता है. होगा. B होगा B. ये अच्छा क्वेश्चन. पॉजिटिव कैटलिस्ट का एनर्जी प्रोफाइल का सही पिक्चर क्या है? तो ये सही पिक्चर है जो ऑप्शन बी है, जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने का और फिर जो कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला है उसको बोल देने का ये पॉजिटिव कैटलिस्ट. I think you're all happy with this. Everybody should be happy with question 3. We move to question 4. See, we are done. I repeat, get a hard copy of the problem sheet so that you can relate properly. You know, do speak more in the class so that, you know, I can move at your pace. Question 4. 2. क्या कर रहा है? 2 2 approximately. होगा. हाँ. क्या हो रहा है? 2 हो रहा है. 2. Approximately 2 आया है सर. प्लैटिनम के ऊपर. अच्छा, इस बार का एडवांस का जो टेस्ट है तुम लोग का 5 जून का, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है. और इस एग्जाम में तुमको ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन करने का है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने का है. मतलब इट इज द रियल जेई एडवांस थिंग. It's not like you go after solving all the questions. You also need to grow the insight of choosing which questions to solve first and realizing some questions would take much more time. So, you know, that aspect needs to grow with time. So, you know, this time the paper is going to be a little bit challenging for a change in chemistry. For the hydroxide of hydrogen and platinum, activation energy is 30 kilojoule per mole और निकल पर है 41.4 kilojoule per mole. Logarithm of the ratio of rates. मतलब K प्राइम और K निकालना है अगर दोनों का EA अलग अलग है. चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है. मतलब if I have log K1 is equal to log A minus EA1 upon 2.303 RT, you know, it says that एक दूसरा रिएक्शन में log K2 is EA2 by 2.303 RT. दो अलग अलग प्रोसेस ही है. One is over platinum, one is over nickel, and they want log K2 by K1. So the difference of delta E, they want. I'll write log K1 by K2 because I find EA1 to be lesser. So EA1 lesser will mean K1 will be more than K2. I think people are understanding. Huh? हाँ, sir. And it helps if you have a hard copy of the problem sheet. I obviously can't go after writing the entire question. And you know, if I write the difference of the 2 in kilojoules upon 2.3, 8.3 value liya hua hai. You know, they want to take this as 2.3 or 8.3 and temperature is 300, I reckon. So again, not a problem with a lot of calculation. Looks a little challenging to begin with, but I have done it. 11400 upon 2.3 into 8.3 into 300. 2.3 into 8.3, I will take it as like 6.9. Yes, 6.9 into 8.3. ये 100 को यहाँ पे काट दे रहा हूँ. 8 7 जा 56, 57 के आसपास होगा. 57, 58 के आसपास. सर 1143 से कट जाता है.
मतलब सॉरी 1143 से कट जाता है तो 300 और 11400 कट जाता है। हाँ मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद द हेल्प यू आर प्रोवाइडिंग. I'm really happy with the help you are providing, Vani. You know, you have been kind in the past, and I'll seek this help from you throughout the class today as well. Good that you're keeping it up. Okay, it's close to 2. I mean, I'll seek this help throughout this class. 3 से कैंसिल हो जाता है, बट अभी मान लें ऐसे ही हो गया. 8 7 56 57 58 के आसपास होगा. हो गया ना? Actually, nearest integer makes the job easier for you at times. क्या बोलते हो बच्चे लोग? Nearest integer at times makes the job easier for you. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वानी और वेद के अलावा क्लास में कोई है ही नहीं लग रहा है. जो भी है, we'll want to move on. Question 5 is again such a nice question for somebody who has been my student, and in general a question which is neither too challenging nor too straightforward, no unnecessary calculations, एकदम बिल्कुल टिपिकल सा. मैं बना लेता हूँ इसको, आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक. टिपिकल सा एकदम एनर्जी प्रोफाइल है, जहां पे जिसको बेसिक आइडिया होगा एनर्जी प्रोफाइल का, he or she naturally would. सर बी होगा ना. ऑप्शन बी. हाँ सर. बी है. तो चौधरी साहब का भी आवाज आ रहा है. नंबर ऑफ इंटरमीडिएट. अचानक मेरा हैंडराइटिंग इतना गंदा कैसे हो गया? एक मिनट रुको. नंबर ऑफ इंटरमीडिएट भी गंदा ही है, बट रीडेबल है आई बिलीव. नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस, और तीसरा है रिडरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, कम ऑन टेल मी. Yes, please, very quickly. So Bombay number of बी. टू Naturally, इंटरमीडिएट. number of intermediates are always the peaks. So, oh, I'm so sorry. क्या कर रहा हूँ मैं? Number of activated complexes are the peaks. So 1 2 3, there are 3 peaks. Activated complex. मैं रिकॉर्डिंग एक शेयर किया हूँ तुम लोग के साथ में, कम से कम 10 साल पहले में पढ़ाया हूँगा वो. मतलब from the very look of that video, you will realize that it's almost 10-12 years old. You would find a thinner me. I must be 20 kgs lighter back then. But remember, at that point of time also, I was using the language activated complex. I see this now coming very often in JEE Mains, and it's such a delight that, the language, the vocabulary at times is so important. Somebody knowing transitory state and not knowing activated complex, again could be caught on the wrong foot. But number of activated complexes is the peak transitory state. Intermediates are always the valleys. This is the intermediate 1, this is the intermediate 2. I hope I'm going all right. And redetermining state is always the one which is having the maximum activation energy, which is step 2. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. जवाब देने का, चुपचाप नहीं रहने का. क्वेश्चन 6 में जाएंगे. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. कल मजा आ गया तो फाइनल देख करके. Any Preeti Zinta fans here? Rate constant of the reaction at 205 into 300 Kelvin hour. क्या यार, पढ़ाई के अलावा और भी बात करने की मूड में नहीं रहता है. पढ़ाई के वाला बात करने की मूड में नहीं रहता. ये कितना लोग का हुआ? 6 नंबर बोलो जल्दी. सर 2520 है. सर 253 2520. ना. इसमें मेरे को लगता है बहुत गंदा कैलकुलेशन है. log 5 दिया है, log 3 दिया है, log 2 दिया है.
log 2 दिया है 0.3, log 3 दिया है 0.48, Yes, sir. log 5 दिया है 0.7. कैलकुलेशन गंदा वाला लग रहा है मेरे को निकालना है क्या है एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स यू हैव टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स well yes please what's the common answer 2520. 2520 is the right answer. I kind of know the answer because I've done it a few times in the past as well. And I need to apply the same good old log K2 by K1. So log K2 by K1 are these values, you know, which are going to be eventually 5 by 3. Please respond to me, 5 by 3. EA 100, 2.3, 8.3 into दो टेम्परेचर क्या 203 सही है ना तो चलो बोलो यार बात नहीं कर रहे तुम हाँ लोग आज मेरे सर। से log 5 minus log 3 0.22 आता है ये 0.22 आता है 0.22 is equal to EA by 2.3 into 8.3 into 600 लिख दूं क्या यहाँ पे हाँ sir. बोल वानी अब तू ही मेरे यहाँ पे काम आती है बता सर इसमें ऐसा कुछ वो नहीं कैलकुलेट करना ही पड़ेगा मतलब हाँ मेरे को भी वही लग रहा है सर 22 22 into 6 कर दे सकते हैं हाँ 132 और फिर 2.3 मतलब करना ही पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते हाँ ये 132 लिख तो तेरे बोलने पे जा रहा हूँ मैं हाँ ठीक है यार इतना काम कर सकते हैं जेई में क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाने के लिए इतना काम कर सकते हैं मतलब दिस इज समथिंग वेयर आई वोंट कंप्लेन दैट मच पर मेरे को लगता है इतना भी काम नहीं करवाना चाहिए केमिस्ट्री पेपर में कम ऑन टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट प्लीज पोस्ट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन आई थिंक यू नो इवन दिस मच ऑफ कैलकुलेशन इज uncalled for in the chemistry part of the paper looking forward to your comments we'll want to move to question 7 are you all there with me question 7 question 7 all right I'll take it for a I mean if you just want to have a screenshot of this you know I'll give you another few seconds anything who wants me to repeat anything anyone who wants me to repeat anything question 7 7 7 नंबर में भी वो स्टेटमेंट ये सब है लिखना पड़ेगा काम करना पड़ेगा नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स again before I write these statements you know somebody who can tell me the number of correct statements without me writing the statements come सर on 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स होगा बी सी डी पहला वाला है more EA less A 4 होगा। higher activation energy क्या बात एकदम बिल्कुल मेरी भाषा का प्रयोग कर रहा है हायर एक्टिवेशन एनर्जी मोर थीटा थीटा याद है तो चलो हाँ सर फिर टेम्परेचर बोलते नहीं हो at lower temperature increase in temperature causes more change in K than at higher temperature चलिए साहब इसका कोई मतलब नहीं होता इसका कोई मतलब नहीं होता है डी कोई मतलब इसका होता है सोच के बताना मेरे को तो कोई मतलब नहीं लगा सो करेक्ट स्टेटमेंट्स ए बी डी है सी नहीं है प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस टी प्लॉट ऑफ कोई बोला कि चारों राइट है कोई मेरे को बोला चारों राइट है हैव द स्लोप ऑफ माइनस बोलो बच्चों कौन कौन सा करेक्ट लगता है तुम लोग ए बी डी A, B, D. ABD was also there in the ground yesterday. ABD. मतलब you people must be kids when you know Virat Kohli and ABD together. You know, एक इनिंग मेरे को याद है दोनों सेंचुरी मारा था. I was teaching somewhere in Tata Nagar or so.
ABD हाँ हो गया। सर, हाईएस्ट पार्टनरशिप था कुछ तो। तू छोटा हो गया यार, मैं टाटा नगर पढ़ाने जाता था कोरोना के पहले, मतलब 6-7 साल पुराना बात है, मेरे को लग रहा है ये। दोनों का सेंचुरी हुआ था, मतलब दे हैव बीन सच अ वंडरफुल टीम एंड सर 15 या 16 का बात है सर। बढ़िया बढ़िया, 3 राइट है इसमें, एबीडी इज राइट। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, 8 सिम्स वेरी गुड, 8 मेरे को लग रहा है अच्छा प्यारा स्वीट प्रॉब्लम है। कोई बोलना चाहता है 7 के बारे में, कुछ और बात कर सकते हैं हम लोग। 8 में क्या करता है, लॉग के वर्सेस 1/t है। अरे 8 का आंसर बताओ कोई। 8 का 8 है, 8 है। 0 to 5 और ये 0 to 20 है, तो मेरा स्लोप हो गया एंड थीटा विच इज 20/5 4, है ना। चाहिए क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इन कैलोरी पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इन कैलोरी पर मोल। चलिए 8 आ रहा है आंसर, 8 ही आएगा नेचुरली, EA/R is 4, EA/R is 4। So naturally, because the slope is equal to EA/R, forget the negative sign, that's understood. It is equal to 4, EA will be equal to in calorie 4 into 2, which is 8 कैलोरी पर मोल। 8 का आंसर 8 है, हाँ सर। 8 का आंसर 8 है। आगे बढ़ते हैं। 9, कुछ ना कुछ तो लक फैक्टर, डेस्टिनी फैक्टर होता ही है यार, मतलब इट कांट बी जस्ट कोइंसिडेंटल। जर्सी नंबर 18, 18th ईयर एंड फाइनली यू नो ही हैड टू विन इट। मजा आ गया कल मैच देख के, लेकिन जो भी बोलो। नाइन 981 बोलो। 225। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया है, स्केल दिया है, टेम्परेचर निकालना है। गंदा ही प्रॉब्लम लग रहा है यार। एक क्वेश्चन में ए दिया है, मैं बोला ना इतना बड़ा बड़ा वैल्यू होगा उसका, 4 × 10⁻13 जैसा। ये ए दिया है 8.3 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर एट विच के needs to be 2 × 10⁻⁻6, find temperature as something into 10⁻⁻1 Kelvin. Give me the answer first. Give me the answer first. Yes, anybody who has solved it, please take my time and your time. Sir, 225. I have no way but to approach it this way. Log K is equal to log A minus 8.3 into 1000 because it's kilojoule upon 2.303. Log 10, they are asking me to take as 2.3, so gracefully accept that. Or they want me to take as 8.3. Certainly this will even out and this C has to be calculated. क्या problem है वाह। -6 plus log 2, -6 plus log 2 is equal to 13 plus 2 log 2 minus ये कैंसिल हो गया 1000 by, मैं बहुत खराब खराब गलती करता हूँ यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ, कोई गलती करूँ तो बता देना। नाइनटीन प्लस log 2, हाँ सर, 19.3। 19.0 थी ना। सर 19.303 थी। छोड़ ना, 0.3 लेके खत्म करूंगा तुम। यही होगा ना बच्चे लोग। हाँ सर। Any better way of doing this problem? Any better way of doing this problem? Yes, please.
I think this is the best ना I can सर offer. P आपसे 225 आ रहा है क्या बच्चों? हाँ सर 225 मेरे को तो आंसर याद है, इसीलिए मेरे लिए ये इतना हेडेक का बात नहीं है, बट हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट 225 फ्रॉम हियर? And again, I wonder what sense does it make to eventually bring a problem of chemistry, to this much of calculation. Which I can help, but this is the maximum I can do right now. Yes, we can move on. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. आदित्य, अमन, अंशिका, चौधरी साहब, तन्वी, तुरवी थी साथ क्लास में, बीच में भाग गई. Sorry, भरवाचो, सावन कुमार. Vani, can you hear me? For some reason, the connection leak. Yes, so I can hear No, you. so stable. 11, 10, 10, 10, 10, 10. 10 देखते हैं. Are you all happy with this? जवाब दो. हाँ जवाब चाहिए, जवाब दो. 10. आंसर बोल दो सीधा. एक्टिवेशन एनर्जी इतना बढ़ा दिया. 532611. यार ये क्या अजीब बात है. 532611. देख के गुस्सा आ रहा है. कौन ये बनाया पेपर? बोलो. टेम्परेचर फर्स्ट फ्रॉम 310 300 Kelvin, the change in cold constant है. So answer 1 है. 1 हाँ सर ये पूछ रहे ना K300 बाई K310 क्या है? अगर ये कुछ ऐसा है, यही है ना कहानी? हाँ, हाँ. हाँ सर चल कोई बात नहीं. मैं पहले बहुत गुस्सा हुआ था ये क्वेश्चन देख करके. फिर कल जब सॉल्व करा था तो कोई मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया इस प्रॉब्लम के बारे में. T2 माइनस T1 10 हो गया, ये 2.3 हो गया, 8.3 हो गया. ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बट कोई मेरे को कोई बहुत अच्छा बात कल बताया था इसके बारे में. क्या बताया था बताऊं? Somebody told me, I don't recall the name, that 532611 is a multiple of 31. See if that's true. हाँ. Can you all hear me loud and clear? Can you all hear me loud and clear? I want you to respond to this हाँ because सर fine. So somebody told me that. I hope I have written the rest all right. Very prone to making mistakes of this kind. 31 का multiple है ये. Somebody told me. Tell me if that's true, and Yes. please tell me what is the value. हाँ? उसको 31 से डिवाइड करके बताओ ना. Obviously, I'm not going to do it. I'm waiting for you to do it. सर पूरा RHS 3 आ रहा है. Okay, पूरा RHS 3 आ रहा है. It sounds good. For the time being, divide this by 31 and tell me. So 17181 17181 आ रहा है. 17181. I think that will go with 3. Sate Pathik. No. हाँ. If you go this with 3, this हाँ will सर be 3 से जाएगा 5727 5727 आ जाएगा. और वो 57. 23 और 83 का पॉइंट कट जाएगा, उसको काट कुटा के 3 आ जाएगा. काट कुटा के 3 आ जाएगा. मेरे को इतना अच्छा लगता है ऐसे देसी लैंग्वेज में कोई बात करता है ना. काट कुटा के 3 आ जाएगा. परफेक्ट. तो अच्छा ही है. मैं पहले टीचर को बहुत गाली दिया क्वेश्चन देखते ही. फिर मैं बोला ठीक ही है, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकता है. मतलब व्हाट नीड्स टू स्ट्राइक यू ड्यूरिंग द एग्जाम आर इज दिस इज द मल्टीपल ऑफ 31. और क्या, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है टीचर की स्कूल से. क्या बोलते हो बच्चे? बोलो यार. Therefore, K300 by K310 is equal to 10 to the power minus 3. This could be written as 1 into 10 to the power minus 3. 1 is the right answer. 1 is the right answer. 11. 216. 200 हाँ सर 216
हाँ मेरे को भी आंसर सर अब याद ही हो गया है, एंड यू नो ऑनेस्टली मेरे पास ये प्रॉब्लम शीट लास्ट ईयर भी था, तो पुराना क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है. But yet again, you will want to tell me how difficult is it to get, you know, the exact value, because it's a numerical value question. So uh, always a catch, you know, to get it 216 exactly. K is equal to 6.5 into 10 to the power 12 per second. ये सब क्यों दिया भगवान जाने. E minus 26,000 K by T. ये मेरे को 26,000 से ही काम है ना. You have to calculate the activation energy in again kilojoule per mole. So I'll again go by EA by R as 26,000. I think I'm doing it all right. And EA would be like 26,000 into whatever value of R is supplied by the problem. They want me to take R as, okay, they don't give you any data. Sir, So I'll take R 8.3, हाँ 8.3 लूँ क्या करूँ पता नहीं, कुछ दे नहीं है तो मैं क्या करूँ. सो 8.3 में 21580 आता है तो फिर 216. हाँ सर. अरे यार, this is the help I am seeking. 2158 0. 21580 आता है. तो 215.8 into 10 to the power 3 ना. हाँ मतलब 0 आएगा. हाँ सर 216. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा. तो द नियरेस्ट इंटीजर विल बी 216. ठीक है. मतलब मेरा कंसर्न यही रहता है कि कोई प्रॉब्लम में ऐसा नहीं हो जाए कि 8.3 लेने से और 8.314 लेने से दो अलग अलग इंटीजर वैल्यूज आ जाए. तो थैंकफुली दैट्स नॉट द केस हियर. एंड अगेन because I find this not very calculation intense, taking everything against, you know, that person who would have said this question. Good job. ठीक ही है, क्या करेगा. कैलकुलेशन भर दिया है पूरा. 12 नंबर बोला जाए. 166. 166 sir. log k is equal to 33.24. ये सब क्यों देता है ये. सर ये तो इजी है कैलकुलेशन. क्या करना क्या है इसमें, ये निकालना है ना. हाँ सर सेम ही है. हाँ ये को किलो जूल पर मोल में ये निकालना है ना. हाँ हाँ सर. तो यहाँ पर ए बाई आर इज 2 into 10 to the power 4. यही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहा हूँ. नहीं सर. नहीं सर. क्या बात, ये तो एकदम मतलब दिल जीत लिए. सर 8.3 से कोई अंतर नहीं हो रहा ना दोस्त. 8.3 लूंगा. कितना हो रहा है, 16.6. हाँ सर 166 आ जाएगा. सर ये इजी कैलकुलेशन था. हाँ मतलब आइडियली यार यही होना चाहिए. अगर किसी को क्वेश्चन पता है जेई मेंस जैसा झंडू एग्जाम है, बस फिर चेक कर लो कि शुरू को फॉर्मूला आता है कि नहीं, खत्म बात. और क्या. 13 9 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल हो जाता है. पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है ये बहुत गंदा क्वेश्चन. सर इसमें बहुत कैलकुलेशन है फालतू का. मतलब मेरे को लग रहा है बहुत, मैं बोला ना मेरे को देख के लग रहा है बहुत गंदा कैलकुलेशन. पहला बात तो ये बोला है. फिर बोलता है द रेट कांस्टेंट गेट्स डबल्ड. रेट कांस्टेंट गेट्स डबल्ड विच हैज टेम्परेचर बाय 9 केल्विन. ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी सोचो, कौन महाशय कौन महान आदमी होगा जिसको ये पेपर का ये क्वेश्चन बनाने का भूत चढ़ा होगा. दो थप्पड़ मारे ऐसा आदमी. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इन द रियल एग्जाम, you know, how could they be so irresponsible. Answer, I know the answer, you know, I've done it in the past, I have the answer. I think the answer which you get is 59. हाँ Yes. सर Okay. 15. हाँ But you know it would take a hell lot of calculation, that too in the real exam. log 2 मान ले फिर भी हम लोग जानते हैं.
but still 2.3 into 8.3 into 300 into 309 यहाँ पर मान लो 9 है. There's a lot of calculation. There's a lot of calculation. So again, if I could help, the good thing is we are going to end on a sweeter note. Question 14, I think, is less on calculation. Think you all agree to this? 14, I think, is less calculation. 14 का 4 है आंसर. और हाँ, 14 मेरे को लगा अच्छा क्वेश्चन है. बच्चा वाला क्वेश्चन है. बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल घटा देता है, तो तुम K प्राइम बाई K निकालो, यही है ना? हाँ. हाँ सर. A catalyst at 300 Kelvin reduces activation energy by 10 kilojoule per mole is the information, and you have to find K prime by K as some e to the power x. You know, you need to find this x. Fair enough? Yes sir. So again, you know, I know the answer is going to be 4, but I'll stick to the fundamentals. Let me write log of K prime by K as EA minus EA prime upon RT as the fundamental equation. And if this is log of K prime by K naturally to the base E, this x will be all of this, you know, EA minus EA prime by RT. Yes or no? Which is 10 into 1000 upon 8.3 and 300. I think this is the case. ऐसे ही ना दोस्तों? Yes sir. ये roughly 4 आएगा. ये roughly 4 आएगा. हाँ. This is not a lot of calculation. 8.3 into 3 is 24.9. इसको 25 लेके ही हो जाता है. 25 लेके ही हो जाता है. ऊपर में 100 बचेगा. So this is equal to ऐसा क्वेश्चन है तो ठीक है, टेंशन नहीं है. I'm going to stop at this note. You know, I'm going to stop at this point. When do we have our next class? We have our next class after your test, no? So see you on Saturday. I was terribly unwell, you know, on last Saturday. I think I had to cancel my class. That was the case, I believe. I was terribly unwell. So at the next opportunity, I can take an extra class to make up for it. Let's meet and talk about the same in the class only. अगले क्लास में क्या पढ़ना है बोलो? यानी कि चलेगा ना? क्या करा रहा था लास्ट क्लास में बाय द वे? बिना कोलोन करा रहे थे. ठीक है. सर वो जो क्वेश्चन आपको भेजा था सर, हाँ वही इससे रिलेटेड था ना, हाँ, Arrhenious मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन था. 2022 या 23 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है. उसका आंसर 5 है. मैं क्लास में जब तेरे से मिलूंगा तो तेरे लिए वो सॉल्व कर दूंगा. 2-3 इक्वेशन लिख करके सॉल्व हो जाता है. थोड़ा कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है. पिनाकोल का एक प्रॉब्लम मैं करवाया था हावड़ा के बैच में, तुम लोग को नहीं करवाया था. वो प्रॉब्लम एसएन सान्याल का ही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम शीट में है. एक बार टेस्ट के पहले देखना. I don't know how ethical is it to talk about, you know, a question in the test before the test. Just check ये स्ट्रेस है और ये ट्रांस है, और इसमें पिनाकोल होने से 2 अलग अलग रिजल्ट बनता है. ये तो मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ रहा है. जो कन्वेंशनल होगा वो सबको समझ में आ रहा है, यू नो. यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन जैसा होता है. यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन जैसा होता है. एक बार एसएन सान्याल में भी देख लेना. ठीक है. ये प्रॉब्लम था पिनाकोल वाला में, एक बार चेक कर लेना. ठीक है. यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता है. सो टेस्ट में केमिकल काइनेटिक्स ज्यादा है क्या? मतलब कंपेयर टू द मेंस वाला पेपर अभी काइनेटिक्स ज्यादा है, बट काइनेटिक्स में जितना भी हो यही है. ऑर्डर कैलकुलेशन, रेट का प्रॉब्लम्स और ये आरएनएस इक्वेशन. इट्स नॉट लाइक आई हैव डेल्ट विद सम मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन और ऑप्टिकल रोटेशन और
There's a lot more which still needs to be discussed, but I've given things which are routine, regular, and as I told you, some questions will have some mathematical deterrents like you have in the real exam. That's also a learning which you need to have in due course. Okay. Anything else you want to talk about? ये लास्ट वाला प्रॉब्लम जो बोल रहा हूँ ना मैं पिनाकोल वाला, ये जहां तक मेरे को लगता है एसएन सान्याल में है। याद आ रहा है तुम लोग को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सीट में था? हाँ सर। मैं चेक कर लेता हूँ मैं। सर आई थिंक सेकंड लास्ट प्रॉब्लम था। ठीक है, ये है, ये लिखा हुआ है एसएन सान्याल में। हालांकि एसएन सान्याल का जो कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन है वो बहुत यू नो स्टीरियोटाइप और एथिकल है। एथिकल मतलब क्या, मतलब चेयर फॉर्म बना के किया है। ठीक है, फिगर आउट, एक बार देख लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ तुम लोग को। आई कैन गिव यू द आंसर। ये बात बताया था कि क्रॉसओवर प्रोडक्ट में नहीं होता, इसका मतलब बाय द टाइम द लीविंग ग्रुप गोज आउट, बाय द टाइम द लीविंग ग्रुप गोज आउट, बाय द टाइम द लीविंग ग्रुप गोज आउट, इसमें तो पिनाकोल जैसे होता है वैसे ही होगा, इससे ये बनेगा। ट्रांस वाला से ये होगा, मैं बताया था ना, बाय द टाइम द लीविंग ग्रुप गोज आउट, बाय द टाइम द लीविंग ग्रुप गोज आउट द माइग्रेटिंग ग्रुप हैज ऑलरेडी स्टार्टेड माइग्रेटिंग। ये सब बात में बताया था ना तुम लोग को, क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं होता है। हाँ सर। प्लीज गो अहेड। So one way of looking at this problem is, you know, cis and trans is generally in a layman's manner written in this way. This could certainly be another way of writing this question. I think you're all hearing me loud and clear. Now, say when it's the cis form, H plus and loss of water, suppose where it's going from above the plane, and you know, as I did tell you, in long run, we'll want to know that by the time this has started to move, this has already started to, you know, come in. Yes or no? Please tell me if you're understanding me or not. Yes sir. And this is how eventually you will have two methyl on the same carbon and double bond over here. है ना? This would look ideal for the leaving group to go and the migrating group to come, you know, from two different planes. ये ऊपर से जा रहा है, नीचे से आ रहा है। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। If loss of water and migration is concerted and in the same step for an isomer which is the cis isomer, this going out and this getting to migrate right away, there is no crossover product. याद है ना, इसका R1 उसमें नहीं जाता, उसका R2 उसमें नहीं जाता। इसका मतलब है कि जैसे जैसे जाना स्टार्ट कर दिया वैसे बनना चालू हो गया। एक ब्रिज बॉन्ड जैसा बना सकते हो। प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर। और ये ट्रांस वाला में ये ट्रांस वाला में अब जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ना, वो इसके साथ में सिस हो गया है। देखो यहाँ पर माइग्रेटिंग ग्रुप सिस हो गया है। दिस इज ट्रांस नेचुरली विथ रिस्पेक्ट टू द टू मिथाइल ग्रुप्स और द टू OH ग्रुप्स। बट ट्रांस आइसोमर में क्या है, you know, when this is prepared to leave, you know, naturally this migrating group is going to be sterically hindered, because you know, this going out and this moving in the same step from the same side of an average plane would be sterically challenged. Yes or no? चाहिए तुमको क्या चाहिए, तुमको इवेंचुअली ये जो ऑक्सीजन वाला कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। यस और नो? मेरे को तो यही चाहिए था, याद है ना, कि रेजोनेंस स्टेबल हो सके। तो अगर ये मिथाइल ट्रांस आइसोमर में जाना मुश्किल है, तो बाय द टाइम इट हैज स्टार्टेड टू मूव इन एंड दिस हैज टू मूव इन द सेम स्टेप बिकॉज़ द टू स्टेप्स आर कंसर्टेड,
What's another way of bringing a positive on this carbon bearing OH? And that's ring contraction. That's ring contraction. That's ring contraction. Another way of bringing the positive, another way of bringing positive to this carbon which is OH. ये मिथाइल नहीं जा सकता बिकॉज ये दोनों ऊपर है. So by the time it's moving out, this can't go. Yes or no? The ring contraction is possible here. And that is how that 5-member ring is going to be formed. That is how that 5-member ring is going to be formed, which will be, this 5-member ring. जिसमें अगर मिथाइल लगा रहेगा तो इवेंचुअली देखो ये आके इस पे चिपक जाएगा, ये आके इससे लग जाएगा. You'll have OH with a positive here, which will lose ester to give it the final product. So this is what is going to happen, and this is a standard case from SM Sanyal. It's not like I cook problems. It's not like I cook problems. It's not like I go by my whims and fancies and I end up telling you everything which needs to be told. Rather, I have to be more apprehensive about drawing a line. So it's ideal that you go with my experience and my choice, where although this has not come in the JEE so far, this could be a real nice problem where the two geometrical isomers cis and trans give two different products of pinacol-pinacolone, and this also justifies that the loss of water and migration is in the same step. I repeat one last time, this looks plain and simple, where all you know about pinacol-pinacolone is loss of water and an alkyl shift, and eventually a carbonyl being formed by loss of H+ in the last step. This is certainly going to become a more stable carbocation in the sense that oxygen alone will stabilize it, and the story I've told you. The same would be sterically not possible here because it is going out and this is migrating in the same step, on the same side of an average plane, both being above, the trans isomer will not have a routine pinacol-pinacolone. And this also makes sense that in case you want the positive on this OH, for things to move a keen pinacol-pinacolone, it would be via a ring contraction. Something which is again given in SM Sanyal or other literature as a classical example of the proof of the mechanism. In the real exam, using the chair form and all, which is as good as what I'm telling you right now. So keep this in mind, and I guess we'll want to stop here. और सर एलिमिनेशन वो सब भी आ रहा है क्या कल? क्योंकि मेंस में नहीं था और उसमें लिखा था सेम. नहीं, एलिमिनेशन से अगर एक क्वेश्चन कहीं इधर दिख गया वरना उतना कोई खास नहीं. ठीक है. और मैं ना अभी थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाऊंगा अभी, बिकॉज अभी फिनॉल एक बहुत बड़ा टॉपिक है. अल्कोहल्स में बाद में पढ़ाता हूँ, मैं फिनॉल हमेशा पहले पढ़ाता हूँ, बिकॉज फिनॉल में काफी नया चीज सीखने का है. बड़ा टॉपिक है, काफी क्वेश्चन आता है फिनॉल से. Alcohol will be more routine. The preparation of alcohol again will involve hydroboration, oxidation, and oxymercuration, demercuration, and SN1, SN2 over a halide, or hydrolysis of, an ether or so. Properties of alcohol will again be elimination reactions and dehydration reactions, and oxidation reductions are बाद में सीखेंगे, but let's begin with phenol first. So after the test, you can start reading phenol full throttle. ये SN1, SN2, E1, E2, nucleophilicity, reactivity, it keeps going on. But we need to make headway on the syllabus front as well. Need to know new reactions, new mechanisms. So phenol is what I'm looking to take up at the next opportunity. ठीक है बच्चे लोग? ठीक है सर. सर मिलते हैं. बोलिए साहब. हाँ, एक और वो जेईई एडवांस का एक और क्वेश्चन था सर, स्टीरियो आइसोमर्स पे. वो थोड़ा आपको भेजा है, देखेंगे अभी देखूं? सर? क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब आ तो गया, आंसर मेरा 13 आ रहा है, एंड बाकी जगह बोल रहा है कि ना उसमें अलाइलिक का कुछ केस है जिसके चक्कर में होगा नहीं. ये तो मेरे को कोई और भी भेजा आज. ये सेम क्वेश्चन मेरे को कोई और भेजा है. 1 methyl cyclohexane 1 E non monoglobination. ठीक है, मैं सॉल्व करके आंसर भेज देता हूँ. मेरे को याद नहीं, बट कोई और मेरे को भेजा है, सेम ही क्वेश्चन भेजा है अभी.
आधे घंटे के अंदर में भेजो, मतलब बिफोर दिस क्लास। ठीक है सर। लेट मी फिगर आउट, कौन मेरे को भेजा सेम क्वेश्चन दे। चलो ठीक है, मैं इसके आंसर बता दूंगा। हाँ, ठीक है सर। चलो, आप बाय।